Hello everyone, welcome to your channel Manware Education. So in this session basically we will see the most important 40 questions for the NIMCET student, those who are targeting related to computer concept. So as we know, the syllabus is divided into two parts. First one is what it's related to computer basic, and second one is the data representation. So in this video, first video, we will see the most expected questions related to computer basic, which will cover the organization of the computer, central processing unit, structure and instruction of the CPU, input and output devices, computer memory and backup devices. So related to these topic, whatever the questions जो कि सबसे ज़्यादा important and expected होंगे, that we will discuss, as well as जिन्होंने अभी तक preparation start नहीं किया, so this is the time for you. So just if you are facing the problem in any particular sections like computer, mathematics, so here you can join us for the sectional program, as well as mock is very important, guys. So before appear the actual mock test, so you can join, you can start to appear the test series. Mock test will be very helpful for you to improve your marks in this exams, and otherwise study material are these video lectures will be helpful for you, where the lots of the shortcuts method which can help to improve your score, as well as easily you can solve the questions. Okay, so you can visit, and on end of the video I will show you the portal how you can explore these programs, as well as I will share this PDF in this social media group. It means Telegram and WhatsApp, so you can join this group, so you will get these questions जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, as well as you can follow us on this social media platform, and वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना. ओके, एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, उनके लिए भी काफी अच्छा चांस है, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड, सो ऑफलाइन के लिए वसई, दादर, अंधेरी, एंड इफ यू आर ऑनलाइन आउट ऑफ मुंबई, सो आप ऑनलाइन के लिए कॉल कर सकते हो, और काउंसलर विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग. सो under the guidance of the expert faculty, they will guide you. Now see the first question: what is the terms of the temporary storage are the components for the difference the data rate, data flow between the devices. तो इस टाइप के जो डिफरेंट एरिया है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, कंप्यूटर स्ट्रक्चर, सीपीयू, नेटवर्क, सो ऑल आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं. सो दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एरिया. सो इस ईयर कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चंस भी इंक्रीज किया गया है, तो पॉसिबल है कि कंप्यूटर बेसिक से जो पहले 3-4 क्वेश्चंस आते थे, मे बी पॉसिबल 5-6 क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ट्राई करो कंप्यूटर बेसिक वाले पार्ट को अच्छे से कवर करने का, एंड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर इज कॉल्ड व्हाट, गाइज? इस कैरेक्टर्स, बाइट, पिक्सल एंड केवर्ट. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाइट्स. ओके, तो सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. द टाइप ऑफ द डेटा स्टोरेज दैट इज कंसीडर्ड टू द वोलाटाइल इज, सो वोलाटाइल बेसिकली जो वोलाटाइल मेमोरी का यहाँ पे बात हो रही है, तो रोम, इट्स रोम, रैम, डिस्क एंड टैप. So RAM and ROM का concept should be very clear. Volatile and non-volatile memory का concept it should be very clear. So RAM is what? Volatile memory, and ROM is what? ROM is what? Non-volatile memory. Remember रखना. Next है यहाँ पे the structure programming technique that graphically represented the detailed step need to solve the program is known as what? So it's called what? Object oriented programming, pseudocode, flowchart and top down design. So यहाँ पे देखो क्या है, structure programming technique. सो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग से पहले एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक फ्लो यूज किया जाता है, तो व्हाट इज इट्स बेसिकली कॉल्ड. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्लो चार्ट. ओके, फ्लो चार्ट रिमेंबर रखो. दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. सो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बिटवीन जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक इंटरमीडिएटरी कंपोनेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है. So what it's called basically, so the program basically, so it's called what? Operating system. So computer का hardware, it means जो hardware होता है उसमें operating system होता है, then we can start to work on a computer. Okay, so operating system याद रखना. तो ये question basically कहाँ से? operating system से. High capacity computers used primarily for research purpose. So research purpose के लिए जो high capacity के computer होते हैं, and such type of the computer is called what? So super computers. Remember रखो. To be effective, a virus checker should be. So guys, my suggestion is what? Related to virus. Virus क्या होता है, कितने टाइप के वायरस होते हैं, इनसे रिलेट करके काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, एज वेल एज जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ी सी उनसे रिलेटेड भी अंडरस्टैंडिंग रखो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो कि एंटीवायरस है. सो इट्स रिप्लेस रेगुलरली, नेवर अपडेट रेगुलरली एंड अपडेट वंस अ ईयर.
सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इफेक्टिव वायरस चेकर्स के लिए क्या है? तो इट शुड बी अपडेट रेगुलरली, सो रेगुलर बेसिस पे इट शुड बी अपडेट. द टिपिकल कंप्यूटर्स कीबोर्ड, which combination of the key need to be pressed make the percentage sign? So concern is whatever the keyboard function related to shortcut keys. एंड ये वाला जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है. माई सजेशन इज वॉट, जस्ट ट्राई टू वॉट एवर द कंटेंट यू हैव, सो जस्ट ट्राई टू रिवाइज फ्रॉम देयर जो भी कीवर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं. तो अल्ट 6, शिफ्ट एंड 1, अल्ट एंड 5 एंड शिफ्ट एंड 5. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिफ्ट एंड 5. नेक्स्ट यहाँ पे मेगा हर्ट्ज इज द सेम एज वॉट. सो यहाँ पे जो मेगा हर्ट्ज के लिए शो किया जाता है, सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं 10 की पावर 6 आप रिमेंबर रखो, 10 की पावर 6. सो यहाँ पे जो हो जाएगा जिसमें 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो देखो यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना. नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर द WORM virus? So again one more question related to virus. So it's in fact the boot sector. It propagates through the internet and email. It has no effect in increasing the internet traffic. It's alter the folder structure. So what is the correct answer related to the worm virus? So it's propagate through the internet and email. तो ऐसे जो virus related understanding है, just try to improve it. Now see the network related, the correct statement for among the following regarding the DNS server is R. So it is a TCP IP service. It's map the IP address into the domain name. It's nothing to do with the internet access, and DNS server can only mention by the ISP. So what is the correct answer? So it map the IP address into the domain name. So domain name system DNS का full form भी याद रखो. What should be the after detecting a virus attack in a computer at the workplace? So देखो ये तीसरा क्वेश्चन लिया है. It means the virus related concept is very important for you. So inform the network administrator, remove the virus using the virus scanner, copy the important file to another computer and disconnect the computer from the network. R, A, B and D. What are the correct answers? So correct answer यहाँ पे रखना, remember रखना A, B and D. A, B and D. Next यहाँ पे in Excel sheet ड्यू टू द रीजंस हैशटैग इस तरह से आपको दिखता है अपीयर इन अ सेल बिकॉज ऑफ व्हाट. बहुत बार होता है कि जब हम कुछ टाइप करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं तो सेल इट्स लुक लाइक दैट. सो व्हाट इज द रीजन बेसिकली बिहाइंड इट? सो एरर इन फॉर्मूला, कॉलम इज नॉट वाइड इनफ व्हेन रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज यूज्ड, व्हेन द फॉर्मूला इज टू लॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा कॉलम इज नॉट वाइड रेंज. सो बेसिकली कंसर्न इज व्हाट कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट के जो बेसिक कीवर्ड्स एंड उसमें जो फंक्शनलिटी होती है, ट्राई टू अवेयर अबाउट इट. In the date 1917, the Pascal language inventor Nicholas Wirth designed a language specifically for, so it was highly speed computer technique, teaching the programming student and helping the market IBM personal computer and use one of the type of the operating system. So correct answer इसका हो जाएगा teaching the programming to the student. So जो initial level की programming language है as well as computer generations, इट मीन्स कंप्यूटर का जो एक डेवलपमेंट फेज है उससे रिलेट करके सारी अंडरस्टैंडिंग रखो. चांस है कि वहां से एक आध क्वेश्चन आएगा. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी सेक्शन है. इट मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, फोर्थ है, और अभी जो हम फिफ्थ जनरेशन यूज कर रहे हैं, इस जनरेशन का स्पेसिफिकेशन क्या है एंड व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी विच वाज यूज्ड in this generation. The first general purpose commercially available computer system was called HAL UNIVAC 1 and Mark 1. So correct answer इसका हो जाएगा UNIVAC 1 correct computer which was general purpose commercial available computer. The 8086 was how many bits processor? So 8, 4, 32 and 16. So correct answer इसका remember रखो 16 bit processor. One way to make the reprogramming a computer much faster was implemented. The storage program concept, multiple reliable section, worst case design and good easy to read the manual. So यहाँ पे क्या है? One way to make the reprogramming computer. So correct answer इसका remember रखो the storage program concept. Next, what generation chip is the Pentium 4 for the Intel Central Processing Unit? So Pentium 4 it's related to 7th generation, 8th generation, 9th generation and 10th generation. So correct answer इसका हो जाएगा 7th generation. Just remember. Next है यहाँ पे which of these is standard interface for the serial data transmission? So ASI second, RS232C, LU6.2 and Centrosonic. So what is the correct answer for it? So remember रखो RS232C. Okay.
नेक्स्ट बेसिकली नेटवर्किंग का पार्ट है. द प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर द कंप्यूटर. सो प्रॉक्सी सर्वर विद एक्सटर्नल एक्सेस एक्टिंग एज अ बैकअप, परफॉर्मेंस, फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेस यूजर परमिशन. सो करेक्ट आंसर इसका रखो विद द एक्सटर्नल एक्सेस. सो ये जो डिफरेंट सर्वर नेटवर्क टाइप के क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस जो 5-6 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन है, उन्हीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो पार्ट सेकंड से ही आएगा, जो कि आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन से. एंड जो 5-6 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस एरिया. Software which prevent the external access to the system is termed as what? It's called what? Firmware, firewall, gateway, router and virus checker. So which prevent the external access. So mostly it's used as a firewall. So firewall protect the basically computer network. प्रोटोकॉल इज व्हाट? प्रोटोकॉल सिंपल सा वर्ड याद करो, जहां पे भी प्रोटोकॉल आ जाए देयर शुड बी अ सेट ऑफ रूल. सेट ऑफ रूल जहां पे भी रहेगा, अ लिस्ट ऑफ रूल ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा ओवर द नेटवर्क. एंड डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल भी हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एसएमटीपी है, एफटीपी है, एचटीटीपी है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी. सो कंसर्न इज व्हाट? नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग रखो, उसके प्रोज एंड कॉन्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो ज्यादा बेटर है. सो स्टार टोपोलॉजी, बर्स्ट टोपोलॉजी, लीनियर एंड रिंग. सो विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ द टोपोलॉजी इन विच द कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड. सो लीनियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाय द वे रिमेनिंग आर द वेल नोन. स्टार टोपोलॉजी, बर्स्ट एंड रिंग टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ द हाउ द नोड्स आर कनेक्टेड. नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द IP वर्जन 6 एड्रेस इज. So 32 bit, 64 bit, 128 bit and 256 bit. So correct answer याद रखना 128 bit. So after understanding the previous year paper, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये टॉप इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ. तो ट्राई करना अच्छे से रिवाइज करने का. हाईली चांस है कि इस डिस्कशन से भी हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको फ्रेम हो जाए एग्जाम में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस कैन यूज एज अ लूप बैक एड्रेस. So 0.0.0 and these all are the options. So correct answer इसका remember रखना B and D. B and D is what? It can be used as a loop back address. Okay, तो कंसर्न इज व्हाट कि जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना, इसी टाइप के आप प्रैक्टिस करना. इट मीन्स जो आपके पास कंटेंट है ड्यूरिंग द नॉर्मल पैकेट फॉरवर्डिंग बाय द राउटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ द IP हेडर इज अपडेटेड. सो सोर्स एड्रेस and destination address, TTL and checksum and C and D. So correct answer यहाँ रहेगा C and D, just remember. Next, with respect to the Manchester encoding, which of the following statement is correct? So it increase the amplitude in the single. It's encoding the scheme and IBM token ring in LAN. It is a technical introduced for the wireless LAN and it include the clock information for the synchronization. So correct answer इसका remember रखो, it's include the clock information for the synchronization. Which of the following device could not be part of the wired LAN based star topology? So basically in a LAN environment, so star topology, which device is not part of that? So switch, we know the switch is it's like something कि सारे nodes इस तरह से connected होते हैं. Repeater is only for the to extend the network and hub is also like this कि hub स्विच की तरह ही होता है. अभी मॉडर्न एरा में हम हब स्विच यूज करते हैं, स्मार्ट स्विचेस. एंड राउटर इज ऑल्सो लाइक दैट कि राउटर से आप 2-3 नेटवर्क कनेक्ट होता है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टार टोपोलॉजी, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट. सो इट्स अ रिपीटर ओनली, इट्स यूज टू एक्सटेंड द नेटवर्क. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद द रिगार्ड टू 600 बिट्स बाइनरी सिंगल इनकोड बाय द सम नंबर्स ऑफ बिट सैंपल. So these all are the options. So you just have to remember the correct answer is what? B, C and D. So B, C and D इसको अच्छे से read कर लेना. And ऐसे questions statement wise भी देखे जाते हैं to make the question difficult. Which command allow you to view the edit configurations file? So देखो यहाँ पे जो file system operating system से basically जो questions है, system edit, register edit, CFG edit and auto edit. So which one is related to the command allowed to the view the edit? So system edit. Next, which of the following file system are supported by the Windows 2000? Choose at least 3. So NTFS, HPFS, CVFS and File32. So are A, C and D. So correct answer just remember रखो A, C and D. यहाँ पे जो mention किया गया है तो basically NTFS, CDFS and File32. Next, which of the following statement would be the found in the autox.bat file? So these are option. File is equal to 40, path is equal to C colon backslash semicolon and then something. So remember रखो path is equal to C colon backslash and semicolon. So this is the correct answer. Next आपका in which order the following item boot? So what is the process of the boot basically? So post, BIOS, GUI, MBR, boot sector,
पोस्ट MBR and GUI. सो करेक्ट आंसर इसका रिमेंबर रखो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम पावर ऑन करते हैं तो बूट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट device, then boot sector load hota hai, and then we can see the graphical user interface. Okay, so this is the step by step process for the boot order. So just remember, which of the following can virus infect? So choose any. So CD-ROM infect हो सकता है, boot sector हो सकता है, system file हो सकता है, write a protected file हो सकता है, या फिर B and C only. So correct answer याद रखो, B and C, boot sector and system file infect हो सकता है वायरस से. नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन टाइप कैन बी रन फ्रॉम द कमांड प्रमोट. सो कमांड प्रमोट से जो हम फाइल रन करते हैं उसका एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, तो .exe, .bat, .dll, .run आर A and B. सो कमांड प्रमोट से जो हम रन कर सकते हैं A and B, .exe एज वेल एज .bat फाइल. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द ड्राइवर्स फाइल. सो ड्राइवर्स फाइल का जो मेन फंक्शन है, इनेबल द समवन टू लर्न विंडोज, enable the specific device to work, configure the auto route express, use the mainly for the PC and गोल्फ गेम. सो देखो ड्राइवर क्या होता है, स्पेसिफिकली जो हम पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई डिवाइसेस यूज करते हैं, जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसका डिवाइस ड्राइवर वी हैव टू इंस्टॉल. सो इनेबल द स्पेसिफिक डिवाइस टू वर्क इन, फॉर एग्जांपल कोई माउस आप एडवांस माउंट अटैच करते हो, कोई कैमरा अटैच करते हो, कोई प्रिंटर अटैच करते हो, तो देन वी नीड अ ड्राइवर. Next, what is example of the microkernel operating system? So it's example of the Windows, Unix, QNX and Match. So correct answer इसका याद रखना, Match. Next यहाँ पे a client of the domain name system DNS application is called what? So it's a name server and name resolver, name client and name inquirer. So correct answer इसका है a name resolver, as well as try to remember the full form of it. Next, WAN is the short form of what? Wide area network, wide access network, wide area network and array है बेसिकली. यहाँ पे देखो array है, यहाँ पे area, Windows area network. So my suggestion is what? Sometime full form related question you can also expect in your exam. So just try to remember the some full form of which is used in computer technology. So wide area network is a correct answer. A device that has the capability to determine the best path and transmit the data packet over the path in the network is called what? So it's called the repeater, breeze, router and hub. So यहाँ पे देखो क्या पूछा, the device has capability to determine the best path and transmit the data packet over the path and network is called, so it's a router. Router it is used. Okay, so these are the 40 important questions from the different area related to the input and output device, virus, computer system, file system, operating system. Try to remember and revise, and such type of the question if you will practice, so definitely 4 or 5 questions which will come from the computer basic part, so easily you can update guys. As well as, so if you are struggling in any particular section, for example computer section, mathematics section, so here I can suggest you these program will be definitely helpful for you, as well as mock tests for the current situation. So you can attempt, you can evaluate yourself. So just see here, so mock tests which will be helpful for you. Here is a NIMCET 5 mock test. अगर अभी तक आपने mock नहीं लिखा है तो it's a very good time, just start to write these mock tests and try to evaluate yourself. And if you are struggling in any particular section, so these sectional program will be very helpful for you for the computer section, mathematics, reasoning or any other sections. And if you want to get a complete understanding about the shortcut method from related to reasoning, mathematics, so these program will be helpful for you guys, self study program. So अगर से आपने properly start अभी तक नहीं किया है, so just start and try to attempt the mock test, try to evaluate yourself. Okay, and those who are planning for the next year, so this is a very good time for them just to start the preparations under the guidance of the expert faculty जो continue exams को लिखते हैं, understand करते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज डिजाइन करते हैं. Okay, so if you are Mumbai based, so you can join us for the Borivali, Dadar, Andheri and Vasai. If you are out of Mumbai, so you can join us for the online. So this is the number for the online and offline, so you can call to our counselor, they will guide you in a better way. So hope so this video will be helpful for you, and after that if you have any doubt, any query, so you can ask in comment, and video अच्छा लगे तो channel को subscribe कर लेना and video को like कर लेना. Okay, so see you in next part with the latest 40-50 important and expected questions. तब तक के लिए just revise and practice. जय हिंद.